Hello dear children, welcome back to my talks. And as you know, this is standard 11th biology, okay, and we are continuing with the same chapter, photosynthesis. Okay, so photosynthesis on the whole, okay, just forgot to put the mic, so give me just a minute. Yes. Okay, so photosynthesis. Today we are going to do the next two topics. Okay, so what is light reaction, and the second one is ETS chain, electron transport chain. Again, very important from examination point of view, and also quite many questions are asked for your NEET medical entrance. Okay, so please pay attention to it. Let us start with this. What is light reaction? Now let us revise what we did in the last class. Okay, I told you that two types of reactions are there, light reactions and dark reactions. Light reactions are those which takes place in grana. What does the grana do? They trap the sunlight, okay, and they trap the sunlight, and what do they do? Okay, do let me know in the comment box. Okay, what is the function of grana? And yes, so that is light reaction, splitting of water, because photosynthesis का एक important constituent water भी है, तो oxygen release and water splitting also takes place. Okay, so water splitting, light absorption, and oxygen release. Okay, and so that is what, and what is formed, do let me know in the comment box. Okay, and yes, there are pigments we had talked about in the last class. The four kinds of pigments. What are the four kinds of pigments? Okay, so two questions for you. Name the four kinds of pigments, and what are the products of light reaction? What is the product of light reaction? So these two questions are for you. All the children, those who are watching, I want you to comment in the comment box. Do let me know whether you are able to understand, whether you are getting it or not. Okay. So the pigments, the four pigments, okay, they are organized into light harvesting complexes. Okay, light harvesting complexes. Now this light harvesting complex, also known as antenna, is made up of all the three pigments. You can say the three accessory pigments. Okay, one more question should I ask you. What is necessary pigment and what is accessory pigment? Got it? So the three accessory pigments it is made up of, and except chlorophyll A, all the three pigments combine over here, and just one chlorophyll A molecule is added, and that is known as reaction center. That forms the reaction center. Okay, and as soon as it absorbs, हम लोग last class में किए थे क्या? नहीं. So here we are going to do light harvesting complexes. Okay, photosystem, and there are two systems, photosystem 1 and photosystem 2. It's not that photosystem 1 और photosystem 2 नेमिंग ऐसा हुआ है कि पहले photosystem 1 आता है और फिर photosystem 2 होता है, नहीं. Okay, it is completely dependent upon the discovery. So first photosystem 2 का discovery हुआ, तो वो आ गया, मतलब it is dependent upon the discovery, not upon the sequence of the reaction. I hope you get it. Okay, so this light harvesting complex, it is made up of hundreds of pigments. Pigments what? Chlorophyll B, xanthophylls and carotenes, except chlorophyll A. Okay, and they are all bound to the protein molecules, and they form the antenna. It is also known as light harvesting system. Okay, do understand that. Chlorophyll A makes the reaction center. Chlorophyll A makes the reaction center, and photosystem 1 में chlorophyll A जो है उसकी wavelength, absorption wavelength है 700 nanometer. Okay, it is absorption peak is 700 nanometer in photosystem 1. Okay, and it is also known as P700. Got it? The same way in photosystem 2, the absorption peak for chlorophyll A will be 680 nanometer, 680 nanometer, and that is also known as P680. So this much you should know. Light reactions, okay, pigments organized into two light harvesting complexes, that is photosystem 1 and photosystem 2. Light harvesting complex, what is light harvesting complex? It is made up of hundreds of pigments, okay, attached to the proteins known as antenna or light harvesting system. It does not contain chlorophyll A. उसके बाद यहाँ पे हमारा रिएक्शन सेंटर आया है, रिएक्शन सेंटर chlorophyll A है. Okay, then we have PS1,
फोटोसिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर है, तो वी राइट P700, एंड इन फोटोसिस्टम 2 द एब्जॉर्प्शन पीक फॉर क्लोरोफिल ए इज 680 nanometer, hence we write P680. Got it? Now let us come to this particular diagram. Okay, so what happens as the sun rays, you can make sun over here. Okay, so as the rays fall over here, so the excitation, the maximum wavelength absorption जो बोल रहे हैं, okay, so that is absorbed over here. This is light harvesting complex, this is LHC, light harvesting complex. Okay, with reaction center, here we have all the different pigments, okay, except one which is chlorophyll A. So this is chlorophyll A, this is known as reaction center. Reaction center केवल एक है, chlorophyll A वाला जगह, बाकी सारे chlorophyll B's, anthophyls, carotenes, सारे pigments हैं वहां पे. तो what does that show, children? Why is it? Okay, so that कोई भी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो सन का रेज आ रहा है वो वेस्ट ना हो, जितना एब्जॉर्ब कर सके, जिस यू कैन से पिगमेंट की जितनी कैपेसिटी है नैनोमीटर एब्जॉर्ब करने की, वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने की, वो सब एब्जॉर्ब करेंगे. दे विल कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल ए. दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. तो ये हुआ, और उसके बाद दैट एज सुन एज दे एब्जॉर्ब, एज सुन एज द क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स पीस, if it is photosystem 1, photosystem 2, this is a general one. Okay, what is light reaction? वो general है, P680 या P700 जो भी absorb करेगा और electron excite हो जाएगा. Then when the electrons get excited, they jump into the other orbit. Okay, और वो jump होगा to the other orbit जहाँ पे cytochromes है, और उसको acceptor भी बोलते हैं. Okay, so here this accepts this particular electron, तो electron acceptor हो गया. Okay, so this is the whole thing, pigment molecules, और ये पूरा आपका what is light reaction और LHC, light harvesting complex. ठीक है? So next we come to this electron transport system. Now ETC chain भी इसको बोलते हैं, electron transport system, ETS और ETS chain. Okay, during the exams it is like we ask, okay, explain ETS chain. Yes. Explain ETS chain or draw the diagram for ETS chain, array diagram for ETS chain. You have to do this. So here what happens? Sun is there. Sun से light आएगा क्योंकि पूरा game light का ही है. So light falls over here. Let me come this side. So light, then light as soon as what happens? LHS को या light harvesting complex. अब light harvesting complex किससे बना है वो हमने पढ़ा. Okay, pigment molecules और one reaction center जो कि क्लोरोफिल ए है. और ये फोटोसिस्टम 2 का हम बात कर रहे हैं, तो फोटोसिस्टम 2 में क्या होगा? P680. तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 से शुरू नहीं हो रहा है. मैंने बोला कि जो जैसे डिस्कवर, तो फोटोसिस्टम 2 P680 हुआ है, और P680 यहाँ का जो क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर, दे विल एब्सॉर्ब दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज P680. P680 जैसे एब्सॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होगा. इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? ओके, इट हैज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर. इट इज द वाटर विच सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स. देख रहे हो वाटर, द ब्लैकबोर्ड इज लिटिल स्मॉल, सो आई ब्रॉट वाटर का इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर से. तो वाटर हम सप्लाई करते हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू नो दैट. Okay, so water and splitting of water. If you remember, here I had told light reaction में splitting of water होता है. तो splitting of water, this releases electrons. तो जो electron release होता है, that is supplied to this light harvesting complex. So as soon as it is supplied over here, और यहाँ पे photosystem 2, that is chlorophyll A, P680 absorb करता है. This particular electron jumps up to the higher orbit. और जैसे जंप होता है, there are cytochromes present on the way, okay, which you don't have to study at this particular level. As you go to graduation level and you take up the same subject, you will get to study. So cytochromes are present. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेगा. इलेक्ट्रॉन जैसे जंप करेगा, इसको इतना लाइट मिलेगा, इट विल गेट P680 वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके, दिस एक्साइट्स द रेड लाइट. रेड लाइट एब्सॉर्ब करेगा, तो रेड लाइट एक्साइट करेगा, क्या एक्साइट करेगा? इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, और फिर दिस विल जंप अप, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल एक्सेप्ट इट. दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके, इट विल ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. तो ADP plus pi gets ATP over here only. और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर से
दूसरा P700 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरा लाइट फोटो सिस्टम का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वहां पे जाके उसको फिर एक्साइट करेगा। ओके, तो दिस LHC, दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन है P700, अब उसको एक्साइट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से दो आए हैं, ओके, वन इज एक्सेप्टेड ओवर हियर, द अदर कम्स हियर, और यहां से जैसे P700 रेड वेवलेंथ, ओके, रेड लाइट एंड ब्लू लाइट एब्सॉर्ब मोर, दैट इज व्हाट वी हैड डन। तो वो जैसे एब्सॉर्ब करेगा, द इलेक्ट्रॉन विल बी जंपिंग फ्रॉम ओवर हियर टू a higher orbital, and it jumps over here to another electron acceptor. Okay, and this electron acceptor again, okay, it oxidizes, you can say, NADP to NADPH. So what are the resultants? It is NADPH and ATP. Okay, that is what is the compounds, you can say, or the energy bonds which are formed as a result of light reaction. लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP फॉर्म होता है, तो ये ऐसे ही फॉर्म होता है, ATP और NADPH. Got it? So I hope you must have got it. Should I do once more? चलो, okay, तो सन से यहाँ LHC में, okay, the rays fall, P680 is absorbed, and this P6, the red light absorbs this wavelength, and finally the electron supplied from water, okay, that is supplied to LHC. LHC light harvesting complex है, और क्लोरोफिल A यहाँ पे P680 वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे उसको मिलता है, द इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड एंड द इलेक्ट्रॉन जंप्स, okay, it is accepted by electron acceptor. Okay, so an electron is used over here in oxidizing ADP to ATP, तो ATP फॉर्मेशन हो गया, और दूसरा it also goes to this, it also passes over here. ओके, तो ये जो सनलाइट है, सनलाइट ये दोनों के पास आएगा। सनलाइट यहां से LHC के पास भी आ रहा है फॉर एक्सिटेशन, एंड इलेक्ट्रॉन सप्लाई वाटर से नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर LHC में आएगा, और सनरेज का लाइट यहां आएगा। गॉट इट? तो P700 वाला वेवलेंथ यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, यहां से द इलेक्ट्रॉन विल बी excited, it will jump over here, and this will oxidize NADP to NADPH. तो यहाँ पे दो जगह से आ रहा है, सनलाइट भी आ रहा है, हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, और इलेक्ट्रॉन सप्लाई फ्रॉम here. Got it? So this is how ATP and NADPH is formed. So this was the class today. Hope you all must have understood. Any doubt anywhere, do ask me. Okay, very important topics. And botany, pure botany. Okay, so thank you for watching, and answer to the questions which were asked in the class, okay, while teaching, and hope you are enjoying the class. Do like, share, and if you have not subscribed, do subscribe it. Thank you all.